अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंटिन्यू करो लेक्चर नंबर 7 मैग्नेटिज्म वनकस डिस्कस करान क्लास 12 तो अत मज अजुक टॉपिक कंटिन्यू करान एप्लीकेशंस ऑफ बायो एंड सवाल लॉ तो अत मज गोडनिच एप्लीकेशन पर दैट इज सो क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर यानी कि यथ पॉइंटस पे ओ पॉइंटस पे कोता मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. Now next we have to find B on axis of coil. यानी कि this is the center axis, this is the center, this is the line. It's a line passing through the center and perpendicular to the plane of the coil. Perpendicular to the plane of the coil. At any point on this axis, at axis पे कुछ नहीं point पे magnetic field calculate करो. क्या करो calculate magnetic field. Clear? तो ये shows topic. Very interesting topic, most important topic as per अगर इस वुचो as per अगर इस 12th वुचो वैसे छुने 12th में ज़्यादा यवान क्या but अगर इस वुचो कांति competitive exam वस्तन यथ मज वारिया चांसेस यथ मज बन कह क्वेश्चन वारिया चांसेस यथ पड़न हेकन क्वेश्चन बनित. क्लियर? तो वुचो कित कनित करो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट ड्यू टू दिस होल कॉइल अथ हेको कॉइल त वनित ड्यू टू दिस होल कॉइल एट दिस पॉइंट P. क्लियर? नाउ प्रोसीजर सोन रोज सु यस वनिक ताम यानी कि बायो-सवार्ट्स लॉस प्रोसीजर सुई प्रोसीजर करो इतनस यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? तो लेट अस कंसीडर वी हैव अ कॉइल of radius A with center O and a current I is flowing in anti-clockwise direction. At मज current I flow गसान in anti-clockwise direction. And we have to find out the magnetic field at point P. अस कतन magnetic field calculate करन at point P. सु कोता दूर छ R दूर कत पेठन from center of the coil. Coil हिंद center पेठ छ R distances पे. Now consider a small element. Let's take a small element at point, say this is C point, at this point. A small element, length element dl. Procedure is coil infinite number of his. Even Sarni's length, each of length dl. Breath kunika length dl length. Clear? The middle element sui element at point CS niche. At point CS niche. Clear? Now, consider one such point, one such length element at point C. One such length element at point C. Then, what is something? Then, magnetic field at P due to this element. Due to this element dl at C will be kota magnetic field by using Bio and Savala. dB will be equal to mu naught divided by 4 pi I dl sin theta divided by distance square. The distance C pit P S tam the distance that is x. So it will be x square. It will be x square. Now, here, what is something? X square will be equal to, we can write x square, estimate key triangle, OPC triangle. Perpendicular, this is base and this is hypotenuse. So x square will be a square plus r square. A square plus r square. As can we convert x square equals a square plus r square? Because you see a the r is known quantities, x is unknown quantity. X is unknown quantity. As magnetic field calculate at point P.
at point P, which is at a distance of r from center of the coil, ना कि from the circumference of the coil. इसलिए पे ऐसे convert करनी थी नस. X square will be a square plus r square. And theta क्या चाहिए नस? Angle between var समझो. Theta is the angle between DL and shabash DL and X. DL and X, which equals 90. यह आसे 90. ये क्या आसे 90? नजर थी. DL च small element. ये length element, small length element. ये यूता small अस हेको ये circular coil. ये यूता small अस हेको ये consider करित यह आसे straight line. This is the DL element. For example, this is DL element. Now this is X. ये च X. Clear? ये DL, ये X. This is X. यमन दोन दरमियान कूता एंगल 90. तो यह प्रेथ कुन DL एलिमेंटस खतर खाली ये होत न C पॉइंटस योत न के याद यह प्रेथ कंस खतर कैज कि यम सात C पट लेफ्टस कुन पको DL एलिमेंट गो ये अम पतन रोज ये आय ये रोज तो अमे आय कुस ये बने इस X छिम अगर यम सारी लाइन जॉइन करो कि X लाइन सर्कमफ्रेंस प्लस ये पॉइंट circumference आख point बे P point यम निमो 2 point पत त्रो इस लाइन from the circumference to this point यम बने कोन यमन लाइन क्या बने कोन तो अथ यस लेंथ आसी या सारी सेम नाउ मसल क्या छतनस एंगल कूत आसी एंगल आसी सारनी खतर 90 एंगल आसी सारनी खतर 90 आख point आसी आख लाइन आसी DL this will be R this will be X ब्याक निमो इस बोन कन यमे this will be X असनिमो ये में this will be X यमन यह हमेशा 90 ये में निमो this will be X चाहे ये में निमो चाहे ये में निमो ये रोज हमेश 90 ये रोज हमेश 90 इसलिए थीटा हमेश कोता थवन यार यह सच 90 so dB तेल कोता नेरी dB will be equal to mu naught divided by 4 pi I DL divided by a square plus r का square. A square plus r का square. Clear? This is the magnetic field due to this small element. Due to the element DL. Due to the element DL at point C. At point C. Now, बनी में ब्याक का element है एक ये थनस. This is say point D. ब्याक element number point D aspect. Clear? Which is just opposite to point C. You guys also opposite to point C diametrically. Clear? Then magnetic field at P due to this element DL at D will be sukutas. dB dash, let us say that is dB dash. It is represent. Then dB dash will be equal to shabash. dB dash is magnetic field at point P due to this element. That means this element. इस इतन की element च. यो से इतन का element DL. इतन इतनी वो से DL but point च D. The dB dash को उतना नहीं रहते same mu naught divided by 4 pi I DL divided by a square plus r square. दोनों क्या ची difference? As there is magnetic field इतनस plus दोनों ही magnitude ची same. दोनों ही magnitude ची same. बस difference क्या मिची? So choose one difference ची direction ची. Difference ची direction. अगर वो तो वन से यह dB है ची dB. एम ची direction ची क्या? What will be the direction of dB at point P? At point P. क्या ऐसी direction? Simply क्या is direction? ऐसा कोई use करें. It will be perpendicular to the plane containing DL and X. DL and even दोनों perpendicular. Direction of dB. The direction of dB will be perpendicular to plane containing
DL and X. DL and X. Tansa banayı tel banavo si direction. Is trawo direction aithinas. तो एक कहाँ ते rule aithinas use करित to find out the direction of either rules as first as lecture as second as third lectures में discuss कर तिमन खर means अश बनाउन axis सिद बनाए angle ये 90 साइडस में कोदा बनाए angle 90. This is the direction of DB. This is the direction of DB. Clear? This is the direction of DB. Now, what will be the direction of DB dash? Perpendicular to the plane containing X and DL for this element. The emis khatri kya bani means axis chha thrown perpendicular. Got thrown perpendicular axis. This will be the direction of DB dash. DB dash. Clear? I'm khatra is samjhana khatra shmetnas model tayar kormut em khatra yus tu observe kariyo tam se heku tu clearly gasit nazar thiyo. This is circular coil. Ye chha nishan circular coil carrying current. Current is flowing through this, which is I, in anti-clockwise direction. This represents direction and this represents direction. Clear? This is I, current. I, clear? Now, this is the diameter. This is the diameter of the coil. Radius of this coil is A. It is capital A. Small a. This is the distance of point P from center. This is the center of the coil. Each point P. It is magnetic field calculate. And you know a godnik element C element. Point C numetinus. I think small element. अगर तो इधर उसी straight line, मगर ये सोरे चीज़ circle, ये straight, clear? DL is moving us now. DL. Now this is the distance, and it is represented by X. You can see it represent X. Watch him muscle ithness. Muscle क्या है? Muscle is DB. Amish direction. Amish direction. Nazar thiyo. ये ithnas current element. That is DL. Clear? Earth pattern perpendicular X ये में clear? When अगर बता है when you say direction of DB क्या है? Direction of DB क्या है? That will be perpendicular to both of these. Perpendicular to both of these. नजर थे. अगर more perpendicular to both of these means so ऐसे ये में यह perpendicular. Yet perpendicular means so size clear? This is the perpendicular. Ye trauma yala as is by perpendicular the plus yishamish direction chamichi. Guess what? Direction is direction of current. DL is direction of current. This is 90. Agar BMI banani by KMI 90. AKMI. Clear? Now, Voluthanus, Akiotus, DB. This is X, line X, off pattern perpendicular thrown. Off pattern thrown perpendicular. This will be the perpendicular at point P. Yes, perpendicular catch 90. You can 90 angle. Means you can put it. Clear? Similarly, you have certain line as Nimo, line, X line. Off pattern as DB perpendicular, that is like this, and here point is what size. Clear? Means ये मैं थोड़ा शी में बनूँ देखो नहीं बनूँ थोड़ा ये मैं पहमत clear उकने पहमत नहीं रास खंडन right इसको clear going now this will be the direction of DB this will be the direction of DB is DB and DB dash now direction is different magnitude was same अगर direction is same आसा तेल करा बात integrate our whole in areas magnetic field that be but direction is different ये सारा direction different आसे what is the resultant magnetic field calculate due to these two elements. Bakin khatri tas baki element and khatri tas same procedure karne se apply. What should sarni khatri karn use ke iskro khali don khatri time patan baki masan for example agar we current element in terms of opposite is agar we is in terms of opposite is
येथस निमो तम सुंद अपोजिट, येथस निमो तम सुंद अपोजिट आस यपर सेम प्रोसेस गसी क्लियर सारे खत रोज डायरेक्शन यो वन तो यह बन कि ये अथनस ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एक ये मैं क्लियर ये बन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू कॉइल एट पॉइंट P क्लियर ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स सारे एलिमेंट मे नी वन अथनस जी मीनस यम जी मे क्लियर यम जी मे अगर इन दोन कैलकुलेट तम पे करो इंटीग्रेट इंटीग्रेशन सत नेस बाकी एलिमेंट बाकी सोरे मैग्नेटिक फील्ड क्लियर नाउ dB dash perpendicular, the direction of dB dash will be perpendicular to plane containing DL and X for point D. For point D. Now, dB is equal to dB dash. दोनों इच बराबर but magnitude इच बराबर. Clearly? Now, so resolve dB and dB dash इन दोनों के शेष करें resolve into कथ मजन rectangular components यम कैसे शेष resolve करें in order to find net magnetic field in order to find या है कोई direction of magnetic field कपर गसी magnetic field direction क्या है इमसंस सोई चीज शेष इतनेस calculate कर resolve dB and dB dash into rectangular component. Clear? Rectangular components. करो इतने rectangular components कथ dBs. Clear? The rectangular component खातिर क्या है procedure? शाबाश. Z components a component along y direction. The back component along x direction. This is x direction. This is y direction. Var samjho. Now, इथे can करो नीति resolve perpendicular. This is minus negative y direction and ब्याक component पे ये मे side. That means मैं वो नहीं कुछ x component तो कुछ y component of dB. बुझिस वनान ऐसे resolve क्या करो ऐसे throw a component along vertical direction, ब्याक component along horizontal, vertical and horizontal. Clear? Now. Let us suppose this angle is say phi. Then this will be also phi. It is phi. You must know phi. Because h barabar same radius chu, same distance chu, दोनों angle आसान बराबर. One विषय. ये chu R. This is y. Clear? Now, ये फिर मैं कोदा phi angle सान कोदा फिर मैं phi angle सान क्लियर अगर ये phi angle को चेंज अगर ये phi angle सान होर खुद रोटेट गो ये कोदा गैस रोटेट ये गैस phi angle सान रोटेट दैट मीन्स युस ये एंगल आस ये आस phi क्लियर तो सिमिलरली युस ये एंगल आस ये आस phi एंगल वार समझुन इतनस ये चीज समझी तम पतन पको ब्रो नजर थी योस R and this is Y R and Y मैं फिर ये Y या ये X Y फिर मैं फॉर एग्जांपल दिस इज X Y 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम ये फिर मैं phi सान अगर ये phi एंगल सान रोटेट गो मींस ये कोता छ phi तेले आसी phi क्या यम ज परपेंडिकुलर यम ज परपेंडिकुलर क्लियर ये फिर में ये बनो बे परपेंडिकुलर वही बनो phi ये बनो phi सिमिलरली यमिस खतर तुछी योस ये में phi ये फिर on ये में ये बनो phi क्लियर योस phi ये बनो phi यूता ये एंगल फिर यूता x फिर त्यूता फिर y ते सेम प्रोसेस छु धनुनी खतर अप्लाई गसान क्लियर सेम रूल नाउ वन कुछ अत मजन x कंपोनेंट तो कुछ अत मजन y कंपोनेंट अत मजन कुछ x कंपोनेंट तो कुछ y component. You guys understand? Then padan pakos bromot. This is y dB dash y. This is dB dash x.
This is dby, this is dbx. Clear? This is not x component of db. Yim chhin x component of db ken. Balki buzai go x in terms of in the direction of x. In the direction of y, direction of y, direction of x. Clear? Now what should we itenas masla? Masla kya chu? Yik cha x component db yuk. Kine yik cha x component db yuk. Agar tai ات مزن کیا آسہِ پوٚرمُت اگر ویکٹٲرٕس آسہِ تۄہہِ یاد ویکٹٲرسس منٛز یتھ سۭتۍ اینگل بنہِ یتھ سۭتۍ رِزلٹنٹ ویکٹر اینگل بنایہِ سُہ کیاہ چھُ آسان سُہ چھُ آسان ایکس کمپوننٹ دِس از ویکٹر نو مطلب یتھ سۭتۍ ہسا بنیو اینگل تھیٹا وۄنۍ کُس چھُ اتھ منٛز ایکس کمپوننٹ M چھا x component کِنہٕ n چھُ x component this is vector A vector A یس منٛز کُس چھُ x component کپٲرۍ ہٮ۪کو أسۍ x component نِتھ اَسہِ کپٲرۍ چھُ x component نیُن یپٲرۍ theta چھُ means this یعنی کہِ along theta db along theta means this y it will be x component یہِ آسہِ x component اتنس تہٕ x component ُک value کوٗتاہ چھُ آسان x component ُک value چھُ آسان شاباش db cos theta या db cos phi इतने से db cos phi so it will be db cos phi clear the y component कोता है सर that will be db sin phi clear the similarly db dash is khadr you go x component that is db dash cos phi and this will be db dash sin phi apori donway clear now one which is opposite db to db is same theta phi is same donway khadr that means rectangular component is that is db cos phi along py point p and y the base ko shat banan db sin phi along px means this along px and db dash cos phi along py dash yathoist y dash likhitas along py dash yani ki downwards and db dash sin phi along px you should know px now dash ke balki shi px same direction db cos phi the db dash cos phi yani ki yim che just opposite equal and opposite to each other db cos phi hor kun db dash cos phi won kun just opposite to each other db is same phi is same means ye kar yim cancel yim gasan cancel the db sin phi db dash sin phi yim gasan add up yim gasan add up yim donway kya gasan add up clear so one has net magnetic field one when is a net magnetic field kya has then net magnetic field at point p warthundan then total magnetic field sarni khatra se hoy condition baki elementan mas te gasi db sin phi db dash sin phi db double dash sin phi im gasan sari add up at kus gets cancel sirf db cos phi db dash cos phi db double dash cos phi im gasan sari cancel clear the total magnetic field at p will be due to whole loop due to whole coil will be sukuta ase shabash nazar thi yakni zorat chani ke but issue zori we can say B will be equal to dB sin phi plus dB dash sin phi plus dB double dash sin phi and so on plus so on
कंटिन्यू रोज इस काल से एंड गस क्लियर नाउ चूंकि इस डीएल छु वारिया लकुट वारिया स्मॉल देयरफॉर यम साथ इन स्मॉल आसी डीएल अस हको यत वनित this can be changed into integration so b will be equal to integral db sin phi क्या is db sin phi मैं क्या db dash या db double dash sin phi because db dash db double dash हम सारी सेम अस कोर दोने पेटे अस वच db कोता छ db dash कोता छ बाकी ते आसन यमै बाकी ते आसन using mathematical induction यमै आसन अतन आस यहै clear so db sin phi now integrate कत छ करन over whole circumference of this coil means this circumference of this coil now or b equals db value throw mu naught divided by 4 pi mu naught divided by 4 pi I dl divided by a square plus r square into sin phi into sin phi now ये phi छन अस वनि पाई ये एंगल छन अस पाई सकून एंगल कैलकुलेट करित फिलहाल ये करोन अस चेंज फ्रॉम ट्रायंगल POC means this triangle POC sin phi equals perpendicular divided by hypotenuse perpendicular is a divided by hypotenuse hypotenuse is this x the x का छु बराबर under root a square plus r square that is under root a square plus r square so put the value here let's throw put the value b will be equal to integral mu naught divided by 4 pi I dl divided by a square plus r square into a divided by under root a square plus r square clear थोड़ा बहुत करो set simplify करित क्या बनी b is equal to mu naught by 4 pi mu naught I a never I a never 4 pi a square plus r square का root 1 plus 1 by 2 that is 3 by 2 means a square plus r square का 3 by 2 the integral का रोज खाली dl कर से हम dl सारी जमा इथे dl सारी जमा करो कि क्या दिएस ये दिएस circumference of this coil that will be b equals mu naught I a divided by 4 pi a square plus r square का 3 by 2 into 2 pi radius that is a 2 pi a this is the magnetic field you are magnetic field kaithas at point p which is at a distance of r from center of the coil from and on axis of the coil each thumb and axis of the coil I'm पता है कोई बेरसा simplify करित इस ये बनेस b equals mu naught I pi and pi cancels out divided by a and a is a square divided by 4 and 2 that is 2 a square plus r square का 3 divided by 2 this is the direction this is the b now what is the direction of b क्या है what will be the direction of b the direction of db sin phi means अगर इस मानो इसे x axis means positive x axis use right hand rule see एक if can right hand rule करने use this is the direction of ये पे ठाओ ये this is the direction of current now this is the direction of current which direction of current clear put your thumb in the direction of current this is the direction of current
curling fingers will give the direction of magnetic field. Yim chi or means yim must near straight. Yim must near straight. Clear center. In area में I'm पता नहीं फिर वापस but center as much कैसी है ना direction की है means इसी की direction means dv sin phi dv sin phi means जैसे axis और axis earth direction में ये जो magnetic field यानी कि beach direction आसी ये है clear अपरी आसी क्या इसके इधर चुना वुचुनो अगर तो वुचु इसी ये मैं current की ये मैं है और को ये फिरोने से मैं ये फिरोने से मैं clear योर चे curling fingers ये डायरेक्शन कर्लिंग फिंगर्स सो बनान ये आर्च डायरेक्शन यस आर्स डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्लियर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो along OP clear this will be the direction of B along OP अगर ये x चौपर so you will write x cap अगर y चौपर y cap अगर z z cap clear this will be the direction of D B net magnetic field clear now basic points which as is raat discuss kor that was B on center if there are n number of turns n number of turns yath was akai turn hui when agar ye coil as variya turns asan variya turns kya turns n number of turns tell kuta magnetic field as by using superposition principle we will find out that it will be n times of this so B n will be equal to n times B B due to 1 clear means n such multiple kar ye them traun n ye bani n B due to n number of coils sarni coil ke goes same direction of current plus same magnitude of current tell in areas n times B tell he go superposition principle use kare aise koi B n times calculate karit clear now if वापस गो इस कत निशन if point P lies at center of coil I mean मतलब if point P lies at center of coil that means R is equal to 0 ये ना रात की कंडीशन जिस रात के लेक्चरस में if point P lies at the center of the coil that is R is 0 point P on में नजदीक युथो में कहते हैं सेंटर पे तेल क्या बनेस मुझे यथ मजन क्या बनेस यथ मजन है क्यों त्रोई यथ मजन है क्यों त्रोई तनवनी मज है क्यों त्रोई फिलहाल त्राओ अस यथ मजन अस के यथ मजन पुट करूं R छ बराबर 0 तो B कोता नेरी B will be mu naught I A square divided by 2 A square का 3 by 2 R is 0 clear A square का square तो 1 by 2 गैस कैंसिल बने Q mu naught I A square गैस कैंसिल divided by 2 A ये शायद नहीं जित के A square का 3 by 2 clear ये वो A square A 2 3 6 divided by 2 that will be A power 3 या square तो root cancel गसा 1 by 2 तो by 2 गस cancel आयत बच 3 या इत कन थे क्यों तो या थे इत कन छसा A power 3 तो हेर कन A square बन कन A cube गो ज गसन cancel आयत बच खाली डिवाइडस मस अख A बन कन बच अको A अगर A के छ रेडियस अगर R आस रेडियस इस रात में R छ रेडियस then twice R mu naught I by twice R इधर ना रात अगर वो n number of turns है mu naught n I divided by twice R clear this is the magnetic you should write expression this is right discuss curve now if point P lies very very far point P should be दूर next point if point P lies if
point P lies very far away from center. यानी कि पॉइंट P वारिया दूर, means R is very greater than A as compared to radius of this coil. R is very large. We can neglect this A then. Dividers must get neglected. Dividers must get neglected. Time patan kya bane this expression. Then B will be equal to mu naught I A divided by 2 mu naught I A square twice neglect kus gesi this A, so ये बने R power 3 twice चूंकि हेरकन गए डिवाइड A स्क्वायर छुन हेरकन करो नेग्लेक्ट किन कैसे छुन करो हेरकन नेग्लेक्ट कैसे कि हेरकन छी प्रोडक्टस मज यम साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शनस मज आस तम साथ हेको इसी नेग्लेक्ट करित बट यम साथ ये प्रोडक्टस मज या डिविजनस मज आस तम साथ छुन नेग्लेक्ट आसान करूँ कि निश्चित हमेशा थोन याद ये गस खाली एडिशन तो सब्ट्रैक्शन विज नेग्लेक्ट क्लियर ये कि अगर स्मॉल आस का नंबर स्मॉल नंबर मीन्स 0.02 अगर ये 0.02 प्लस करूँ कोई बड़िस नंबरस 10 100 करूँ प्लस अत पे ज्यादा डिफरेंस ऐसा कोई नेग्लेक्ट कर या सब्ट्रैक्ट कर ऐसा कोई नेग्लेक्ट बट अगर मल्टीपल करूँ या डिवाइड करूँ अम पे फर्क तम साथ हेको नेग्लेक्ट कर इसलिए म्यू नॉट आई ए स्क्वायर थोन पे इथे कन बट बन कन हेको नेग्लेक्ट कर बन ट्वाइस आर मीनस डिवाइडस मज क्या गो आर क्यूब ओतन तम क्या आर स्क्वायर क्लियर तो सेंटरस पे आरस पे डिपेंड कहीं मीनस यूत दूर गो बी डिक्रीज तो यह कित कन डिक्रीज सेंटरस पे मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम युथी बह थोड़ा बहुत दूर गोस यह 1/r स्क्वायर युथी बह अम खुद दूर गोस यह बन 1/r क्यूब तो अगर तुम ग्राफ वुचु अत क्युत ग्राफ बन this is center O, this is center clear centers पे maximum B अम पत क्या vary by 1/r square याद थो तम पतन 1/r cube मीन जीरो पे ये पका like this ये clear this is positive ये अगर ये साइड गो कॉइल बेस साइडस गो मीनस ये साइड अपर ये ग्राफ मीनस सेम प्रोसेस ये क्लियर दोनों खतर यह गो हाफ पोर्शन राइट पोर्शन गो लेफ्ट पोर्शन दोनों पोर्शन खतर रोज ग्राफ यम साइड प्लस यम साइड क्लियर दिस इज दिस साइड एंड दी गो यम अंदुक साइड क्लियर दिस इज द वेरिएशन ऑफ यह हावान यह हावान variation of B with R clear now most important point इतने में डिस्कस कर तो हम पता करो क्लोज सो पॉइंट क्या कंपेयर कर कंपेयर क्या कर बी सेंटर कंपेयर बी सेंटर यह कॉइल बट बी सेंटर बी एक्सीज मीनस ऑन एक्सीज यम कंपेयर कर कंपेयर ये सात रेशो वो दोन यानी कि बी सेंटर बाय बी एक्सीज इन दोन रेशो यह कूत नीर 1 प्लस R divided by A R square divided by 3/2
1 plus r square divided by a square का power 3/2. This is the ratio. ये ratio कित कन करियो तुई गोड नियो तुई b center am पत करियो divide b axis यानी कि उसी magnetic field along by center द्राव बे along axis मन दोन करियो divide करित के नेर तुई दे इथनस a में यदि तुई divide करियो तुई बच इथनस a square plus r square power 3/2 divided by a power 3. ये रस बचता अब पता करो a square common here. A square थी common के near a cube square तो 1/2 गैस cancel आइट बचे a cube. A cube near common अंदर रोज 1 plus r square by a square का power 3/2 divided by a cube. That is 1 plus r square by a square का power 3/2. कौन सा चीज़ डायरेक्ट हुआ क्वेश्चन ratio of magnetic field at center to the magnetic field on the axis at a distance of r on axis due to coil carrying current is given by that is 1 plus r square by a square का power 3/2. ये तो होता याद है which is how ये तनस वन बे व्याक पॉइंट या बे आग ज पॉइंट वन बे तनस यम तय जरूरी याद थो यानी कि मन दोन ये पॉइंट्स पे if r is equal to a अगर r is बराबर s ऐसे कहते हैं प्लस माइनस a यूज करित प्लस माइनस r ते हको यूज करित प्लस माइनस r मींस पॉजिटिव r है नेगेटिव r दोनों साइड अगर बराबर आस r equals a मींस युतु दूर गसो सेंटर पे युत रेडियस युतु दूर गसो सेंटर पे युत रेडियस तेल क्या बने b center will be equal to 1 plus 1 power 3/2 into b axis ये कोड में आप और क्लियर तो इशू r बराबर s 1/1 बने 1 plus 1 is 2 power 3/2 into b axis b center. Now 2 power 3/2 से सॉल्व करें ये को 2 power 3 that is 8 का रूट ये बने 8 का रूट that will be 2√2 into b axis b center equals 2√2 b axis ये सातन r आसी बराबर as ये समझना अतन के नजर थी के ये रेडियस a बगस युतु दूर कूत युतु दूर गस सेंटर पे यथ एक्सिस पे अम पतन येथनस कूत मैग्नेटिक फील्ड आसी येथनस कूत मैग्नेटिक फील्ड आसी दैट विल बी b center with respect to b center कूत आसी 2√2 b axis b center का तन आसी बराबर अस हको ये वन वन यथ लाइन पे लाइन सेंटर लाइन अत लाइन पे कथस आसी शाबाश सेम मैग्नेटिक फील्ड कत डिस्टेंस पे आसी सेम मैग्नेटिक फील्ड यूत सेंटरस पे दैट इज 2√2 मगर कंडीशन क्या खतर यम साथ रेडियस आसी बराबर यम साथ रेडियस आसी बराबर डिस्टेंस मींस 2√2 बन तम साथ क्लियर सिमिलरली ब्याक पॉइंट वन बेतनस अगर वन a आसी बराबर r आसी बराबर a/2 r आसी बराबर r equals a/2 तब सद r equals a/2 r इक्वल थ्रो a/2 ये को बनेस b center equals 1 plus a square by 4 divided by a square का पावर 3/2 a square गैस कैंसिल by 1 plus 1/4 का पावर 3/2 बेशक b axis that means 5/4 का पावर 3/2 b axis ये 5/4 सॉल्व करो ये क्या नहीं 5/4 का पावर 3/2 that is 125 divided by 64 का पावर 1/2 b axis. This is B center. Now, which equals
125 का रूट, that is we can write 5 under root 5 divided by 64 कमिक रूट छ 8, 8 8 64, that is 8 b axis. ये हेक तो कुन ते डिस्टेंसस पे वनित, कुन ते पॉइंटस पे, कुन ते डिस्टेंसस पे कंपेयर करित कम ज b सेंटर प्लस b एक्सिस, ये हेकु तुम कंपेयर करित अतनस. क्लियर? So this is all about this b axis on coil. B axis on coil. Clear?